माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझना आया। खादा नूर देख के अखियां चो हंजुर उड़दे। कितना अच्छा लगता है आवाज सुन के। इंडिया इंडिया। मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल के पूर्वी साइड वाला इंडिया। मिशन था टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करवाने में मदद करना। আচ্ছা এখন আপনারা সবাই এই শান্তভাবে বসতে পারেন। We have a long way to go, right? Alright, once again, good afternoon everyone. The wait has been really long, but worth it. Trust me. Okay? जिस वजह से आज सभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो है कि करीबन 2 साल के कोविड के सिचुएशन के बाद कुछ ब्रांड न्यू रिलीजेस, अमेजिंग रिलीजेस होने वाली है। उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज रिलीज होगी 1 हफ्ते में। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अनेक, एक ऐसी फिल्म which talks about the socio-political scenario. I had to lose muscle again, so that's how the life is. But yeah, it's Pretty much a method actor. You go into a method if you've not played something you've not experienced in life. For example, I'm not this person. I'm different from Joshua. So you take more training, and I have a friend of mine in special forces. I can't take his name because he's in special forces. So he's just like this guy. Yeah. Kind of inspired. Absolutely, he's my childhood friend, and he's almost my best friend. So like I have 2-3 best friends. So yeah. ओके, सो इंस्पिरेशन ड्रॉन। अब मुझे ये बताइए, जो ट्रेनिंग पीरियड आपकी रही होगी तो काफ़ी मुशक्कत भरी रही होगी, और यू हैड टू डू लॉट एक्चुअली टू ट्रेन अप योरसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस बट मोर ऑफ द द साइकी ऑफ इट। I think whichever film I do, like Article 15 or Anek with Anubhav Sinha, it arises from empathy. If you have empathy towards fellow Indians, fellow communities, or people in general, so I think your psyche is prepared in a way because the film says something. It is kind of value addition to the society. As an artist, you have a certain social responsibility. I think you should fulfill that with every film. That's my way of taking it, and I believe in cinema for change, and this is part of that. And we are seeing that from the first film of yours, actually. You have taken it very seriously. First one was okay. It was a comedy, so this is different. But yeah, it's the same genre maybe. एब्सोल्युटली। अच्छा, मैंने बहुत सारे यहाँ पे सवाल किए, बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे पेट में कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज बना रहे, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि हमारी पूरी प्रेस मीडिया यहाँ पे मौजूद है, एंड दे आर, आई एम श्योर दे आर लोडेड विद क्वेश्चंस। सो दिस इज एन ओपन फोरम। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? Ayushman, this is Shubhodip from S News. I can't see you, sir. Can you raise your hand wherever you are? Yeah. Actually, behind the lights, that's why I can't see you. Shubhodip. Exactly. Shubhodip. Shubhodip. Hi, My Shubhodip. question to you would be, we have seen that a sport plays a massive role in this film to unite the country. It is actually in real life, we also see when we go to a stadium to watch some sport, be it cricket, be it football, we cheer for Hindustan, we cheer for India. What is your take on this particular issue that sports unites the country? I think it's both sports and cinema. They're the 2 biggest entities in the country, especially cricket and cinema. So I guess, of course, when you're playing a particular sport, you will look out for the best player in the team. You don't really feel that this person is of certain sect or certain community or speaks a certain language. If he's playing for your team, your country, you're supporting that person. Same goes for movies. If you like a particular actor, पापा बोलता है हम लोग इंडियन नहीं है, इसीलिए मुझे इंडिया की टीम के लिए खेलना है। मैं तेरी फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकता, तुम मेरे फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकती। हम सब ऐसे ट्रेजेडी में रहते हैं।
40 विलेजेस में पोस्टर लगे हैं इसके सपोर्ट में, पीस अकॉर्ड के अगेंस्ट। इसको रोकना होगा टाइगर सांगा। बाकी सारे ग्रुप से बात हो चुकी है हमारी। अभी जॉनसन Destroy the whole group. जॉनसन कौन है? I don't know. जॉनसन लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। दे आर द पीपल्स वॉइस। पीपल्स वॉइस 5 साल में एक बार सुनी जा सकती, रोज रोज नहीं सुनी जाएगी, और अगर सुनी जाएगी तो सब जगह, नहीं तो कहीं भी नहीं। वायलेंस इज नॉट अ सोल्यूशन। सरेंडर कर दो। Hi, this is Roshni from Sinha. Hi, Roshni. So my question is, so this is for the first time the political unrest in the northeastern region is being portrayed in a mainstream film. So what's your comment on that? And also, what was the impact on your psyche after you were done shooting the film? Okay, we've made films in Northeast in the past, but this is the first mainstream film, yes. At the same time, this is the first film where there's a correct representation. Like, Andrea Kevichusa is not just a character in the film, she's the female lead in the film. In fact, her role is at par with my role. So this has never happened before. So if it's coming from the horse's mouth, the people who have suffered in Northeast, I think it means a lot. And I think Indian Hindi cinema has aged with this film because there's a correct representation. 80% of the cast is from the Northeast. Of course, there's a certain empathy in everybody's heart, but when it comes from the person who has suffered, I think it holds more weight. If you give the pedestal to that person, it's more credible. It's the right way to do it. Yes, I felt a lot about Northeasterners when I heard the first-hand accounts when we were shooting in Assam in Meghalaya. So yeah, there's a certain change, and we're still learning and evolving. Of course, it's a very complex situation out there. We just term them as Northeasterners, but they are also multicultural, multilingual. They're different tribes. There's so many different languages. There is also not it's not a unified entity over there, because in Manipur there's some struggle going on, in Nagaland also. So I think it's again, it was an eye opener for me. I thought they don't like. A common educated Northeasterner doesn't like to call them as a Northeasterner. They want to represent their state or their tribe, and they're very passionate about it. पार्लर वाली है, हाँ? या ये पार्लर है? अगर आइडिया को भी टीम में ले लेते हैं, तो ये टीम जो है इंडियन बनेगी या चाइनीज? हमको चिंकी बुलाते हैं। We did not want India here. नॉर्थ ईस्ट में 30 से 40 एक्टिव अलगाववादी ग्रुप्स थे। अचानक एक ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो गया, जॉनसन। सच सच बताओ, किसके लिए हथियार मंगवा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं बाहर निकाल दूंगा। जहाँ से खुद निकलना नहीं आता वहाँ जाता नहीं मैं। Ayushman, this film talks about India, Hindustan. Which common factor do you think binds the entire nation? I think it's diversity. There's so many languages, so many religions, and every 10 kilometers there's a change in dialect. I think our diversity is the biggest strength. That's the uniqueness of our nation, and I think that binds us together. One more question. That presently a debate is going on over Hindi language, and Hindi language has a reference in this trailer, in your film also. What's your take on this, and do you think the actors and the artists should be bit more responsible while talking in this debate? I guess everybody comes with certain kind of experience they've had in life. What I feel is that we should give importance to each and every language in this country. अगर इंडिया के मैप से स्टेट्स के नाम छुपा दूं, तो कितने इंडियन हर स्टेट के नाम पे उंगली रख सकते हैं? ये है नॉर्थ ईस्ट। टीवी पे एक मिनिस्टर बोल रहा था, त्रिपुरा मिजोरम का कैपिटल है ना। इतना भी नहीं जानते कि दोनों स्टेट्स के नाम है। आप कहाँ से हैं सर? तेलंगाना। साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर। पीपल ऑफ तमिलनाडु शुड कॉल यू नॉर्थ इंडियन। मे बी। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से? नो, सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। तो कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? मैसेज कुछ अलग है, देश को जोड़ने की बात करती है, भाषा की बात करती है, अलग अलग मुद्दे इसमें छेड़े गए हैं।
and I'm sure you like this film. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीस किसी को चाहिए ही नहीं, वरना इतने सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जीतेगा कौन? हिंदुस्तान! Can you hold the photo? Sir, second. Thank you, ma'am. I've already learned. Ayushman, एक सेल्फी। Ayushman एक सेल्फी चाहिए। Ayushman एक सेल्फी चाहिए। सेल्फी उठेगा।